Hello everyone and welcome back once again with a new video of Nationalism in India Major Dates Part 3। यस मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई सौमेन झा एंड इंस्टा। अगर आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं अभी इस वीडियो को तो सौमेन झा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेट्स। नंबर 1, 1920 to organize business interest business class formed the Indian Industrial and Commercial Congress, which is together known as Commercial Congress or Chamber of Commerce right now. Yes, ये क्या था? एक टाइप के ऐसी संगठन जहाँ पे बिजनेस ग्रुप्स अपने लिए राइट्स की डिमांड कर सके, इन द सेंस कि रिड्यूसिंग द कस्टम बैरियर्स, टैक्स स्लैब्स, as well as fixation of a fixed exchange ratio kind of. Okay, number 2, 1927, the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI, was established, and it was done by Purushottam Das Thakurdas, G.D. Birla. These kind of prominent businessmen of that time, they participated in the formation of Chamber of Commerce, Industries, FICCI in 1927. Now, number 3, 1928, the Simon Commission arrived in India. Yes, एक नई सरकार बनी थी किसकी? मिस्टर टॉरी की। कहाँ? लंदन में। तो मिस्टर टॉरी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ England on that time when he appointed Sir John Simon as a chairperson of the committee called Simon Commission. And what work given? So the main task to draft a new constitution based on the Indian social, political and economical circumstances, so that England, means the British, get more power in India and they can control India more efficiently. So इसी काम के लिए साइमन कमीशन को एक टीम के साथ चेयरपर्सन बना करके इंडिया भेजा गया। उन्हीं के नाम पे इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा, जिसका कि कांग्रेस और बाकी सत्याग्रहियों ने ब्लैक रिबन लगा करके बॉयकॉट किया था एंड नारा दिया था साइमन गो बैक साइमन का। Yes, moving to the number 4 is 1928, the Hindustan Socialist Republican Army, HSRA. Yes, this was the group founded by the rebels, the real rebels and the real heroes of the India, those who, like you can say, put energy in the freedom struggle. They just flooded, like you can say, they never ever thought when their blood used to flood like water. So फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में द लीडर्स लाइक भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष, इनके द्वारा फॉर्म की गई HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, वाज द फर्स्ट आर्मी just made by the local on a local level for Indian Republic. Like ये वो लोग थे जो लोग गरम दल के नेता आप कह सकते हो, काइंड ऑफ। अप्रैल 1929, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, यस, इन्होंने थ्रू बॉम्ब ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि दिल्ली की असेंबली में बॉम्ब मारा था। और साथ ही साथ काकोरी ट्रेन कांड, आपने सुना होगा काकोरी ट्रेन कांड, जहाँ पे लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन को भी लूटने का प्रयास किया गया था। बहुत सारे खजाने थे, ग्रेन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर, एंड दे अटेम्प्टेड इट। सो काकोरी ट्रेन कांड एंड वॉज डन बाय अप्रैल 1929. And the main heroes were Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. Next, number 6, October 1929. The Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 that the dominion status for India in an unspecified future. Look, what is dominion status, guys? Dominion status का मतलब एक तरीके से कि India will like rule in two parts as a dual government system. सेंट्रल पे ब्रिटिशर्स होंगे एंड द स्टेट विल गवर्न बाय द रूल बाय द लोकल अथॉरिटीज, काइंड ऑफ द इंडियंस ओनली, है ना। एंड दिस विल डन थ्रू इलेक्शन प्रोसेस. सो इट्स अ काइंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वेयर सेंट्रल विल होल्ड बाय देम एंड state will hold by the Indians, kind of, you can say. Now, and for this first round table conference was set up, but the first round table conference was boycotted by most of the Congresses as well as the Satyagrahis as well as all the leaders, because Mahatma Gandhi was not ready to participate in it. He is not ready to agree, like he is not agree with all this, what dominion status and all that concept. But yeah, Muslim League participated in this. So this was the point number 6. Now point number 7, December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj. Now guys, what is Purna Swaraj concept?
The concept of Purna Swaraj means full independence, and it was done in Lahore. Date याद year month and year याद रखना, December 1929. And लॉजिक क्या था कि नाउ वी विल नो, लाइक वी विल नॉट एक्सेप्ट द डोमिनियन स्टेटस काइंड ऑफ थ्योरी, एंड वी वांट अ कंप्लीट फ्रीडम, एंड वी आर एबल टू हैंडल आवर कंट्री. सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. और इसी को बेस बना करके 31 जनवरी 1930 को, नहीं उससे पहले एक और इवेंट हुआ था गाइज, 26 जनवरी याद रखना, 26 जनवरी 1929. इट वॉज सॉरी 1930, my mistake. So 26th January 1930 was the day when Congress, under the leadership of Jawaharlal Nehru in Lahore only, they celebrated Independence Day. समझ रहे हो मेरी बात? तो दिसंबर 1929 के इस पूर्ण स्वराज के फॉर्मेशन के साथ, नारे के साथ, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था. और इसका मेन मोटो क्या था? टू शो द ब्रिटिशर्स दैट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी सपोज आवरसेल्फ एज फ्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर एनी अदर गाइडलाइन काइंड ऑफ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 8. 31st January 1930, MG sent a letter to Lord Irwin. Like, who was the Lord Irwin? Lord Irwin was the current Viceroy of India on that time from the British government, and it was a letter demanding 11 demands. It was written in that letter, Mahatma Gandhi written 11 demands. In those 11 demands, the most famous demands were abolition of salt tax, removal of land revenue, you can say fixation of foreign exchange ratio for the businessman classes, and like the free revenue, like you can say total abolition of revenue for the poor peasants, like the patidars and the jats kind of, those who are the poor classes in these community. Basically patidar and jats were the rich class in peasants class, but those who were poor for them. So these were the some few basic major demands of that time, which was written in that 11 as in 11 demands by Mahatma Gandhi, 31st January 1930. Now number 9 is the 11th March 1930. 11th March, as he given a time period, just try to understand it, कि on 31st January 1930 Mahatma Gandhi given a time period that till 11th of March, if they will, like if Lord Irwin do not performed anything, kind of like do not answer in a positive manner, अगर वो सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं and he is not ready to accept our demands, then we will start civil disobedience movement or something big as a movement, as a you can say revolution kind of. So as usual उनका जवाब नहीं आया लॉर्ड इरविन का in a positive manner what Gandhi ji was expecting against the overall demand letter. So by 11th March 1930 he started salt march. Why? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वाई सॉल्ट वॉज चूजन. तो दिमाग में रखना कि सॉल्ट वॉज अ कॉमन थिंग. सॉल्ट वॉज समथिंग विच इज लाइक कॉमनली यूज बाई रिच एंड पुअर. सो सॉल्ट कैन बाइंड एवरी वन एंड मीन्स एवरी वन कैन रिलेट विथ सॉल्ट. सो सॉल्ट एज अ मीडियम, एज अ कॉमन मीडियम गांधी जी चूजन फॉर दिस व्हाट यू कैन से फॉर starting the civil disobedience movement. So he started with his 78 disciples from his Sabarmati ashram of Gujarat and moved towards Dandi. Dandi is a coastal area in Gujarat where he used to reach by 6th April 1930, and there he like by breaking the salt law. How? You can see in 6th April 1930 MG reached Dandi and ceremonial violated the law manufacturing salt by boiling seawater. So it was a kind of monopoly. It was a kind of monopoly of the British. उस टाइम पे ऐसा था कि इंडियंस को टैक्स भी देना है नमक पे और साथ ही साथ इंडियंस क्या नहीं कर सकते, सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. इट इज़ अ टोटल मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश व्हाट दे होल्ड इट. सो बाय मेकिंग द सॉल्ट he used to he just tried to break it out. Okay, moving to the next, number 11, April 1930, Abdul Ghaffar Khan, like during the CDM was started and CDM के बीच में क्या हुआ ना कि अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया फ्रॉम द साइड ऑफ व्हाट यू कैन से पेशावर से. तो पेशावर से उनको अरेस्ट कर लिया गया एज वेल एज पंडित जवाहरलाल नेहरू also get arrested from in UP. सो यूपी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हो गए, पेशावर के अंदर
यू कैन से मिस्टर अब्दुल गफ्फार अरेस्ट हो गए। और आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि अब्दुल गफ्फार इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। He was also known as Frontier Gandhi. So Abdul Ghaffar arrested from Peshawar and Pandit ji arrested from UP. Both the main disciples, both the main chele of Gandhi ji get arrested. So people also get violent and they started attacking over the British chowkis and all British monuments and all British buildings, whatever you can say. So it was a great violation going on that time, and which causes thousands of killed, like people died during the possessions and the overall police march when British started attacking over them, like in a very brutal manner. Okay. Now, number 12, 5th March 1931, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement as the CDM moved towards the violence, which is against the non-violence theory given by Mahatma Gandhi. Yes. And entered into a pact called Gandhi-Irwin Pact. What is Gandhi-Irwin Pact? Gandhi-Irwin means Gandhiji like given a kind of that demands, you remember ना, जो अभी हम लोग पढ़ा था, डिमांड्स 11 डिमांड्स, उसी 11 डिमांड्स पर चर्चा करने के लिए इरविन ने गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया इन लंदन। तो गांधी जी भी इसके लिए रेडी हो गए, उन्होंने सीडीएम को कॉल ऑफ किया, बंद किया और चले गए लंदन। किसके लिए? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। Yes. Now moving to the next. Number 13. December 1931. Gandhiji went to London for the conference, but negotiations broke down and returned disappointing. Reason? कौन? तो एक तो इरविन was not also ready to do very much negotiation. दूसरा बम मार दिया था किसने? तो बी आर अम्बेडकर ने। क्या है देखो नेक्स्ट पॉइंट में। इन 1930 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन clashed with Mahatma Gandhi in the second roundtable conference by demanding separate electorates for the Dalits. Yes, चुनाव के लिए सेपरेट, जहाँ पे दलितों की संख्या बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है, वहाँ पे सीट्स का रिजर्वेशन इलेक्शन में मांगा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसके लिए? दलितों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। और उस क्लास को उन्होंने क्या डिनोट किया? डिप्रेस्ड क्लास डिनोट किया। ठीक है। और उन्होंने एक और रिजर्वेशन डिमांड की थी, दैट इज द रिजर्वेशन इन एजुकेशन। I think you got it. Now next, moving to the next is September 1932, the Pune Pact, September 1932. It gave depressed class, later to be known as scheduled caste, reserved seats in provisionals. Yes, Gandhiji, look, what exactly happened? Gandhiji returned from London, like from the second round table conference, and he set on fast. ठीक है। वो बैठ गए पूना के अंदर आमरण अनशन पे कि भैया जब तक अंबेडकर अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तब तक तो भैया हमें आमरण अनशन करूंगा। रीजन, गांधी जी न्यू दैट दिस स्टेप विल ब्रेक हिंदूज इन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, लाइक हिंदूज विल जस्ट गेट सेपरेटेड। अभी तक तो दूरियां हिंदू और मुसलमानों में थी, बट अब क्या हो जाएगा? हिंदू में भी दो धड़े हो जाएंगे एंड फॉरवर्ड क्लास हिंदू विल स्टार्ट हेटिंग एंड लाइक स्टार्ट फाइटिंग विद द बैकवर्ड क्लास हिंदूज ऑन दिस पॉइंट, एंड बैकवर्ड क्लास विल स्टार्ट डूइंग द सेम. So it will be a kind of civil war situation will create in India. So to avoid all these things, he just started Amaran Ansan, like complete fast on death. ठीक है। जिसका असर दिखा, अंबेडकर को भी समझ में आया कि गांधी जी की पॉइंट क्या है, गांधी जी एग्जैक्टली क्या रोकना चाहते हैं, विच कैन हैपन इफ ही लाइक डू नॉट स्टॉप, लाइक डू नॉट स्लो डाउन हिज डिमांड. सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑल्सो एग्रीड गांधी जी सिचुएशन, ही अंडरस्टूड गांधी जी सिचुएशन एंड ही वेंट. और वहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, एंड दिस पूना पैक्ट इज लाइक गिवन a separate electorate for the Dalits, but they were voted by General Assembly, like general people, everyone. Yes. Number 16 is 1905. Painting of Bharat Mata was done by Abhinendranath Tagore. Yes, Abhinendranath Tagore painted first image of Bharat Mata based on the song written by Bankim Chattopadhyay or Bankim Chatterjee. You can say
Okay, now number 17 and the last one, 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. Yes, exactly, Swaraj flag during the Swadeshi movement. Gandhiji like designed this flag, and in this flag there was it was tricolor, red, green and white. और इसके बीच में spinning wheel थी, which is based on the idea of self help, यानी कि स्वयं की मदद करना. जो गांधी जी हमेशा कहते थे कि भैया used to try to set up own industry, try to set up your own work, own business and just support yourself. So yes, Charkha, the spinning wheel, was the symbol of self-help, which is in the center of white, जहाँ पे आज हमारा अशोक चक्र है. And exactly the upper one is red, lower one is green, and in mid we have white color. So it was a Swaraj flag designed by Mahatma Gandhi by 1921 during the Swadeshi movement. Okay, so this is the end of the part 3 and end of all the dates which is given based on the NCERT in the book. I think जो बच्चे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट तबीयत से सुन के उसको 2-3 बार सुन लेंगे, your dates and events will just messed up, man. We will again meet with this chapter in a detailed view where I will give you more and more good questions, kind of जो major questions है वो मैं आपको बता दूंगा. Till then, take care, good day, bye bye. मिलते रहें और देखते रहें ज्ञान बाई सोमेन झा और follow in Instagram by सोमेन झा. Let's get for today it's closed. Bye bye, take care, good day.